हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो अभी हम आए हैं डर्बन में वेकेशंस के लिए, जिसमें कि हमारा डेट सेकंड है, जिसमें हम आए हैं इलंगानी रेस्टोरेंट में। ये सदरसन का रेस्टोरेंट है। इस होटल के अंदर इलंगानी और 2-3 और रेस्टोरेंट्स थे, बट आज हमने यहाँ पे बूफे बुक करा था। ये आउटर साइड है सदरसन की, और इलंगानी की एंट्री यहाँ से है। तो बहुत ही अमेजिंग बूफे था इसका, मतलब वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अमेजिंग तो नहीं बोलूँगी, मतलब कि अच्छा था। टू मच वैरायटीज़ थी। अभी आप देखो कि सिर्फ मैं खा रही हूँ और फूड दिखा रही हूँ, और ये मैं क्यू में लगी थी इसमें कंफर्मेशन के लिए कि जिनकी बुकिंग है वो मतलब वही जा सकते हैं। प्रायर बुकिंग वाले ही जा सकते हैं, रैंडम वॉकिंग्स नहीं थे। और इन्होंने मुझे कंफर्म करने के लिए कॉल भी करा था, बट मैंने उठाया नहीं। एज़ ऑलवेज़ मैं यही करती हूँ तो बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने उठाया नहीं तो आपकी बुकिंग कैंसिल है। सो अब आप आगे देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें इतना ज़्यादा अनलिमिटेड फूड और इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं कि यू कांट इमेजिन। सो आप देखो। और ये मैं पूछ रही थी कि टाइमिंग क्या बुक कर रहे थे, तो हमने 7 o'clock से बुक कर रहा था। तो गाइज़ आप इस वीडियो का मज़ा लीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। थैंक यू सो मच। गाइस यू कैन सी दैट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और बड़ी मुश्किल से हम लेके आए। व्हाट इज दिस? नो यू ट्राई, नो यू ट्राई। So you can see her plate, and then they also give you the drinks. Generally the non-alcoholic drinks are included in the buffet, and for alcoholic drinks you have to use the drinks menu, and then you have to pay it separately. It's fine because this is the first time we have come to this place. It's nice. Okay. You can see my plate. And they have so much of rush, guys.
Custard, Pilsina, and they have halwa pudding also.